Good morning students, my name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So start with the new topic. We are see the last lectures or previous lectures. So in the last lectures we can study about the introductions of the op-amp, then differentials, amplifiers. So in the last lecture we can see that the basic introductions of op-amp and the classification of op-amp. So first of all, the analog and digital. So what is the basic difference of the analog and digital circuits? So analog circuit जैसे ही हमने देखा था, analog circuit operate and work with the continuous values. It means that कि जो वैल्यू टाइम के साथ या दूसरी क्वांटिटी के साथ कंटिन्यूसली चेंज होता है, उस सर्किट को बोलते हैं एनालॉग सर्किट. एंड द वैल्यूड सिग्नल और कंटिन्यूस वेरिंग ऑफ द सिग्नल्स, एंड दीज सिग्नल्स आर कॉमनली रिफर्ड टू एज द एनालॉग सिग्नल. फॉर एग्जांपल, द एनालॉग सिग्नल इज साउंड, लाइट, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेट्रा. and these all are the change with the times. Now in similar way, in the digital circuits they have only the two possibility, zeros and one. Zeros is called the low and one is called the high. यानी कि डिजिटल सर्किट में सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वांटिटी यानी कि सिग्नल कंसिडर करते हैं, जीरो और वंस. So we can say that the digital circuit operate or work on the signals whose values exist at two levels only. The values is zeros and ones, and these signals are commonly referred to as the digital signals. At any given instant of time, the value of the digital signals can be either a 1 or 0, which is represent the high or low values. So now the amplifiers. So basically amplifiers is a device which is used to amplify the weak signal to strong signal without changing the informations, or the boost the weak signals without changing any input informations. So these are the amplifiers. जैसे हम जानते हैं कि हम कहीं जगह पे एम्पलीफायर यूज़ करते हैं क्योंकि अच्छी साउंड सिस्टम हो. सो द नेगेटिव फीडबैक इज यूज इन द एम्पलीफायर बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग द गेन ऑफ द एम्पलीफायर्स, एंड व्हेन द गेन इज डिक्रीज द नॉइज इज ऑल्सो डिक्रीज, सो सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीजेज. सो यहाँ पे हमने देखा कि गेन मीन्स कि ये जो आप देख रहे हो उसकी सिग्नल जो वीक सिग्नल है उसमें डिस्टॉर्शंस है, इसके जो गेन है वो कम है, और एम्पलीफायर में से जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा और प्रॉपर सिग्नल होगा. यानी कि डिजिटल सर्किट्स में जो भी सिग्नल्स चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में जैसे आईसी है या ऐसे ही कई सारे इक्विपमेंट है कि जिसको ऑपरेट फिक्स सिग्नल्स चाहिए ऑपरेटिंग के लिए, तो इसके लिए हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वन एग्ज़ाम्पल के जब हम माइक से स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो विदाउट एम्पलीफायर हम जब भी बोलेंगे तो उसमें नॉइज़ यानी कि हम जो आवाज़ सुनते हैं वो आवाज़ में डिस्टॉर्शंस होता है, और वो डिस्टॉर्शंस रिमूव करने के लिए हम एम्पलीफायर लगाते हैं. तो यहाँ पे वही है, आप देख सकते हो कि किस तरह से चेंज होता है. नाउ द स्टार्ट विद द डिफरेंशियल एम्पलीफायर. So differential amplifier is none of the others is the op-amp. So that the short form of the op-amp is operational amplifiers, and its work on the differential amplifiers. So and the op-amp is a essential component in the various electronic circuits. So all the op-amps are the differential amplifier due to their input configurations. If the first voltage signal is connected to the input terminal and the remaining signal is connected to the opposite input terminal, the result output voltage is related to the difference between the two इनपुट वोल्टेज सिग्नल. जैसे ही
हम जो डिफरेंशियल्स करते हैं कि एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू को कंपेयर करते हैं एंड देन आफ्टर एक जो सॉल्यूशंस लाते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन मैथ फॉर्म. So that the output voltage can be calculated by connecting the each input to zero voltage ground using the superposition theorem. So differential amplifier is the basic building block of the op-amp, and the functions of the differential amplifier is to amplify the difference between two input signals. So the differential amplifier is used in the many applications. Response from the many megahertz is required. So the equations is differential amplifiers is output is directly proportional to the difference between the two inputs. So you can see here the figures. These are the two different inputs and the one output. So the amplifier is an electronic device used to increase the magnitude of the voltage, current, power of a input signals. So it take a weak electronic signals and reproduce a similar waveform at the output by using the external power source. So जैसे ही मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जब माइक टू स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, तो एम्पलीफायर के अंदर कहाँ किस तरह की प्रोसेस होती है. तो यू कैन सी हियर कि इनपुट सिग्नल्स में मैंने माइक कनेक्ट किया हुआ है. देन आफ्टर द प्री एम्पलीफाइंग, यानी कि जो वीक सिग्नल है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम प्री एम्पलीफायर लगाते हैं. देन आफ्टर का वोल्टेज ड्राइव सर्किट्स, यहाँ पे हम वोल्टेज एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं. जो आप इनपुट देख सकते हो कि थोड़ा डिस्टॉर्शंस वाला है. देन आफ्टर दी पावर स्टेज, जहाँ पे यहाँ पे हमने देखा कि टोन एंड द वॉल्यूम कंट्रोल होगा. एंड देन आफ्टर द फीडबैक, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वापिस से प्री एम्पलीफायर करेंगे. एंड देन आफ्टर इन द लास्ट स्टेज गो टू द power stage, means की power amplifiers, and you can see the figures of the system के pure signals मिलेगा. So these are the basic block diagram of the differential amplifiers. Now the types of a power amplifiers. So power amplifiers types. So first of all start with the power amplifiers. So what is the features? So power amplifiers, the power transistors are required to be used. ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी वजह से उसका कंट्रोलिंग इजी हो जाता है. द पावर एम्पलीफायर आर बल्कि, ज़्यादा लोड कनेक्ट कर सकते हैं. द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट इन देयर आउटपुट्स एंड दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द लार्ज पावर्स. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस. सो द फर्स्ट वन इज द ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर्स, एंड लास्ट वन इज द डीसी पावर एम्पलीफायर्स. सो ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स में क्या होता है कि जो हम ऑडियो सिस्टम होती है, जैसे कि सीडी ड्राइव है या वॉइस रिकॉर्डिंग है या जो भी है, वहाँ पे हम ऑडियो पावर एम्पलीफायर यूज़ करेंगे. रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर जैसे कि एफएम रेडियोज़ है, जो एयर एज ए मीडियम होगा टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स, तो उसके लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर यूज़ करेंगे. और डीसी पावर एम्पलीफायर जो हम डीसी इक्विपमेंट जैसे कि डीसी मोटर है, ड्राइव सर्किट है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम डीसी पावर एम्पलीफायर यूज़ करेंगे. सो ऑडियो पावर फ्रीक्वेंसी, जैसे ही मैंने आपको बताया, एम्पलीफायर राइज द पावर, दिस इज नोन एज द स्मॉल सिग्नल पावर. देन आफ्टर द रेडियो फ्रीक्वेंसी, विच वन इज कॉल्ड द large signals power and DC power amplifiers. So depending on these, there are the mainly 5 classifications. Class A, which one is the 360 of the input signals. Then after the type B is the 180 degree of the signals, you can see here. Then after class AB, class C, D, and these are the class. So in the last lectures we can see these in the basic informations of the classes. Now
The today's topic is the classification of op-amp, equivalent circuits and block diagram of the op-amp. तो क्लास ए की बात अगर मैं करता हूँ तो क्लास ई एम्पलीफायर्स विच वन इज द एनालॉग वेवफॉर्म आर मेड अप द पॉजिटिव हाई एंड नेगेटिव लोज, जैसे कि पॉजिटिव हाई नेगेटिव लोज मीन्स की जो हम साइन वेव कहते हैं उसको. सो इन दिस केस द एम्पलीफायर द entire input waveform is used in the amplification process and a single transistor is used to amplify in the both positive and negative half wave of the waveforms. So to achieve the high linearity and the gain, the output stage of the class E amplifier is based on the which one is conducting all the times, and then the amplifiers to be classified in the class A. The zero signals idle current in the output stage must be equal to or greater than the maximum load currents. Usually the loudspeaker will be used to require they produce the large output signals. So the class E amplifier operates in the linear portions of the characteristics and curves, and the single output device conducting through the full 360 degree of the output waveform. So you can see the figures. Okay, this one is in the class A, only one transistor will used, and you can see the figures, the input signals है, and उसको ये वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स करने के लिए यहाँ पे हम क्लास ए में क्या होगा कि उस बेसिस पे हम आउटपुट सिग्नल्स कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आउटपुट सिग्नल्स में इनपुट सिग्नल्स जो है उसको पूरी तरह से 360 डिग्री में आउटपुट वेवफॉर्म्स देंगे. नाउ द क्लास बी पावर एम्पलीफायर आर डिजाइन टू रिड्यूस द एफिशिएंसी एंड हीटिंग प्रॉब्लम्स प्रेजेंस इन दी क्लास ए एम्पलीफायर. पर क्लास ए में क्या होता था कि एक ही ट्रांजिस्टर यूज होता था तो हीटिंग प्रॉब्लम लेते थे तो और एफिशिएंसी भी कम रहती थी, तो उसको कम करने के लिए क्लास बी यूज़ करते हैं. तो इंस्टेंट ऑफ द सिंगल ट्रांजिस्टर टू एम्पलीफाई द एंटायर वेव फॉर्म, दिस क्लास ऑफ द एम्पलीफायर यूज टू द टू कंप्लीट ट्रांजिस्टर्स एंड द वन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज पॉजिटिव हाफ साइकिल्स waveform and the other amplifier is the negative half of waveforms. So each active device conducting one half 180 degree, and the two of them the combined the amplifier is entirely signals. So when the input signals goes to positive, the positive base transistor conducting while the negative transistor is off. So likewise when the input signals goes negative, the positive transistor will be off, while the negative base transistor is on, the conducting negative portions of the signals. So you can see here these are the, यहाँ पे हम दो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, वन फॉर द पॉजिटिव एंड सेकंड फॉर द नेगेटिव. उसकी वजह से क्या होगा कि क्लास ए में जैसे एक ही ट्रांजिस्टर था तो हीटिंग रहेगी क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टाइम ऑन रहता है. यहाँ पे हीटिंग का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा और एक्यूरेट आउटपुट मिलेगा. But here only the 180 degree will be output. Then after the, अब जैसे ही हमने क्लास ए दिखा, क्लास बी दिखा, सो क्लास ई एंड क्लास बी एम्पलीफायर्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी एम्पलीफायर्स. जैसे क्लास ए में हमने देखा कि वो आउटपुट 180 डिग्री देता है, बट एफिशिएंसी और जो हीटिंग है वो दोनों प्रॉब्लम रहती है. और क्लास बी में क्या होता है, वो 180 डिग्री ही देगा आउटपुट, बट उसका हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई. तो वो दोनों क्लास को कंबाइन करके क्लास ए और बी पावर एम्पलीफायर मैन्युफैक्चर किया है. तो दिस क्लास ऑफ द एम्पलीफायर आर डिजाइन टू रिड्यूस दी लेस एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लास ए एम्पलीफायर्स एंड द डिस्टॉर्शंस ऑफ द सिग्नल क्रॉस ओवर regions in the class B amplifier. So class E and currently one of the most common use of this audio power amplifier designs. So the two transistors are a very small base voltage and typically 5 to 10% of the quantities current OB base transistor just above its cutoff the points.
and then the conducting device, either the bipolar or FET, on from more than the 1/2 cycles. So the 180 degree and 360 degree depending on the choose the base bias point as shown in figures. So the you can see here वो ये जो आप देख सकते हैं सेकेंडरी साइड जो बायसिंग है वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे ही एज का लेंथ चेंज करके हम बायसिंग सेट कर सकते हैं. तो वी कैन यूज दी क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर्स. नाउ द क्लास सी पावर एम्पलीफायर्स. So design of the class C power amplifier allows the great efficiency but reduce the linearity and conduction angles when it's under the 90 degree. So in other words we can say that it's sacrifice the quality of the amplifier of to increase the efficiency. क्वालिटी डाउन हो जाती है बट जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी. So the lesser conducting angles, the impulse grid distortions, and so each class of amplifiers are not suitable for the audio amplifier. So they are used in the high frequency oscillators and amplifier of radio frequency signals. So class C amplifiers generally contain a tuned load which filtered and amplify the input signals. So the class C amplifier design has the greatest efficiency but the poorest linearity of the class of amplifiers mentioned here. So these the previous class A, B and AB are the considered the linear amplifiers as the output signal is amplitude and the phase are linear related to the input signals. So the class C amplifier is heavily based home. The output current is 0 for more than one of the half cycles and sinusoidal signals with the transistor idling at the cutoff points, and the conducting angle of the transistor is significantly less than the 180 degree and it's generally around the 90 degrees. So you can see here the figures. So other is the D, E, F, G, etc. are used the amplifier have the PWM module, PWM pulse width modulations, digital signals, and under the category of the switching power amplifier tune the output either on or off. So you can see here the what is the basic difference of the class AB and class C. So class A have the transistors conducting during the whole cycle of the sinusoidal input signals. Then here the class B, the transistor conducting during the 1/2 cycle of the input signals. Class AB have the transistor are conducting for the slightly more than the half of the cycles. And class C. Now direct coupling amplifiers. So direct coupling is the coupled method in which the output of the one stage is directly connected to the input of the next stage. So direct coupling is used in the different and operational amplifiers. You can see the figures. The direct coupling is conducted with the two transistors. Here you can see there Q1 and Q2. A voltage divider base bias as a resistor network R1 and R2. You can see that the R1 and R2, these two are the voltage base difference के लिए, which is provided on the transistor Q1 base the two collector resistors. Here the RC1 and RC2. The transistors of the Q2 itself bias were also used to emitter bias, and the resistor is RE1 and RE2 emitter bias. Okay. Now the direct coupling amplifier is operated without the using the frequency sensing components like the capacitor, inductor and the transistor, so that
the direct couple amplifying the A and C signals with frequency as a low fractions of the hazards. So these are the direct coupled amplifier is to improve the signals. What is the operational amplifiers? So what is the op-amp? Now अब हम बात करेंगे op-amp की. So op-amp is the operational amplifier is directly coupled at a very high gain amplifier with the the op-amp has the high input resistance and the low output resistance. So the term operational amplifier has now become totally integrated into the today's electronics terminology, and it may not realize that it dates back to paper published in the 1947s. So in the operational amplifier is a very close approximations to perfect amplifiers which has the infinite gain, infinite input impedance and zero output impedance. So the main use of the op-amp is to amplify AC and DC input signals, and the name operational amplifier has been given because it was originally designed to perform the basic mathematical operations such as the addition, subtractions, multiplications, differentiations and integrations. So the operational amplifier has the two inputs. One is called the inverting inputs, is make with the minus sign of the schematic diagram, and the another is the non-inverting inputs. This makes with the positive signs. You can see that. So op-amp, the two input gain, their name are way which I amplify the signals. Non-inverting inputs, the operational amplifiers are non-inverting is made by the positive signs and the circuit diagram. If the found that the positive voltage applied to non-inverting input will produce the positive signals at the output, and inverting signals to operate operational amplifiers invert the input is made by the minus sign on the circuit diagram, and positive voltage is applied to the inverting output or input will produce the negative switch at the output. So now the operations amplifiers, you can see that the inverting the signals. Now we can talk about the equivalent circuits. So the equivalent circuits of the op-amp includes the values E, R0 and RA. Here you can see that this one is the resistance input and resistance output. So the A is the amplifiers of the V1, V2 is the equivalent Thevenin's voltage source, and the R0 is the Thevenin equivalent resistance. So E is the gain of the op-amp. So first equations is the output voltage can be written as V0 equal to gain into difference of the voltage, so A into V1 minus V2. So we can say that VID, so ideal voltage, A is the gain and gain of the voltage, and the VID is the differentials input voltage, where A is the voltage gain, VID is the differentials voltage, V1 is the non-inverting input and inverting input. Now the today's last topic is the block diagram of the op-amp. So the block diagram of the op-amp, you can see the figures. Yes, so non-inverting input, inverting input, then after they have the main 4 stage, input stage, then after the intermediate stage,
then level shifting stage, and the last one is the output stage. So in the input stage, the first stage is called the input stage, and it has the two inputs. One is the non-inverting input, which is make positive, and the other is the inverting input, which is marked in the positive. So the dual input balance output differential amplifiers in this stage. Then after the intermediate stage, so in the second stage is called the intermediate stage, and the intermediate stage is dual input unbalanced output differential amplifier, and in this stage increase the overall gain of the op amp. यहाँ पे क्या होगा कि जो पीक सिग्नल्स का गेन है वो इंक्रीज करेगा. देन आफ्टर द लेवल शिफ्टिंग, so level shifting stage, in this stage is used to shift the DC level at the output of the intermediate stage downward to 0 voltage with respect to the ground, and the error signal is developed in the intermediate stage due to the direct coupling and gets the amplifier is sufficient stage. So level shifting stage में जो signals है उसके emitting follow using the constant current basis पे increase होगा. And the last one is the output stage. The output stage increase the output voltage swing and the current supply capability of the op amp, and the good output stage also provide a low output resistance. It means that the output voltage is complementary in symmetric push-pull and amplifies the सिग्नल. यानी कि आउटपुट स्टेज में हम क्या जनरली यूज़ करते हैं कि उसके अंदर जो सिग्नल्स है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाने का प्रोसेस होगा. सो दीज आर द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द op amp. सो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैव is the infinite voltage gain A, which one is infinitive. Then after the infinite input resistance R in equal to infinitive. So if the input resistance is infinite, there will not be any load efficient on the input source, यानी कि कोई source connected नहीं है. Then after the zero output resistance, so R0 equal to 0, the output resistance of the amplifier is low or ideally zero. It can be driven in an infinite number of devices. Then after the infinite bandwidth, so bandwidth is equal to 0. These amplifiers amplifiers can amplify any frequency from the 0 infinite without the attentions. Then infinite common mode ratio. It means that the amplifier is free from the undesigned common mode signals such as the pickup, the thermal noise and others. Then after the infinite slew rate, the slew rate includes the rapidly with which output of the op amp change in response to the change in the input frequencies. Then after the zero output voltage, where input difference voltage, so VID is 0, so the characteristics do not change with the temperatures, and the perfect balance is V1 equal to V2 equal to V. So these are the properties mentioned about the ideal op amp, and this type of op amp is called the voltage control voltage source op amp. So today's topic, you can see, if any questions regarding this topic you can call me, and if any questions arise in this topic you can mail me. My mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.